to the Masterclass Season 3, Episode 5. I feel honored to welcome our respected principal, teachers, our eminent speaker of the day, Mr. Yogesh Agarwal, the Masterclass committee, and last but not the least, the students who will be the prominent audience of the day. The topic for our today's Masterclass seminar is Growing Your Career Using LinkedIn. I would like to state a quote by a well-known American strategist, Mr. Jason Miller, who states, "One out of every 3 professionals on the planet today is on LinkedIn." So truly, this seminar is going to enlighten us about the prominence of LinkedIn in today's era and how we can use it to grow and boost our careers and pave new paths for us to experience. I'm hopeful that this seminar will be an enlightenment and delightment for all of you, and all of you will learn something new today out of this seminar. Now, I feel that I can hand over this to Urzin, and I'm sure that all of you will have a great time ahead. Urzin, can you please take over to introduce our speaker for the day? Thank you, Pooja. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I introduce our esteemed speaker for today, Mr. Yogesh Agarwal. As the visionary founder of Revamp Tribe, Mr. Agarwal has dedicated his career to empowering entrepreneurs and individuals to establish a formidable online presence through strategic utilization of LinkedIn, websites, and pitch decks. With a remarkable track record, Mr. Agarwal has successfully served over 50 high-profile clients, earning him a reputation as a sought-after expert in this field. His contributions have not gone unnoticed, as he has been featured in prominent media outlets such as BBC News, TEDx, Josh Talks, Entrepreneur India, and Your Story Media. Mr. Agarwal is also the co-founder of GoTezu, a leading employee engagement company that counts Amazon and HDFC Bank among its esteemed clients. His expertise extends to academic institutions, where he serves as a LinkedIn trainer at esteemed institutions like IIMs and IITs, delivering over 100 talks to aspiring professionals. Notably, he played a pivotal role in generating an impressive 20 crore rupees in revenue for Byju's in just 4 years, showcasing his ability to deliver tangible results in the dynamic landscape of digital entrepreneurship. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a true trailblazer in the digital realm, a mentor and a catalyst for success, Mr. Yogesh Agarwal. Thank you so much, Urzin. यार इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है, but शुक्रिया. Thank you so much for such a detailed introduction, regarding everything that I've done so far, and the commendable way, the way you said the story. So hello, everybody. So this is Yogesh, and I'll be taking over from here, I guess, right, Urzin? So I'll be allowed, or someone else is anything left, right? You're done, right? This is mine now. Okay, cool. So we have 40 plus people out here. Are there teachers also in the Yes. Zoom? Hi, sir. This is Dharti ma'am. I'm the coordinator. As Okay, well ma'am. as we have Naveen sir along with us, who is the vice principal of our college. Naveen sir, are you there? Yes, very much there, Dharti. Good to Hi, see sir. Happy to have you guys here as well. First of all, guys, देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ. This session is regarding LinkedIn and growing your career. But again, as we say, we are here to make a personal brand for ourselves. That's how people hire us. So just like Coca-Cola has a logo, if you see Denver has a logo, if you see there's a Denver, so आपको Denver का logo दिखता है, वैसे ही personal brand का logo आपका face होता है. So everybody who is there with their cameras off, probably I would want you all to switch on your camera. अगर कोई ऐसे पोजीशन पे है, ऑन नहीं कर पा रहा है, तो अपनी पोजीशन आप कहीं और आप लेकर जाइए अपनी तशरीफ को, और फिर आइए, because I will want each one of you to switch on your camera. तभी जाके I'll interact. Once I see the screen full of rectangles having faces which are moving, then only I'll proceed. ठीक है ना? I guess Naveen sir and Dharti ma'am, this is what we'll go forward with, right? Perfect. Yes. और जो, yeah, so I'll give you 2 minutes
everybody to make sure that you're switching on your camera because the session is regarding personal branding. Sammy is somewhere outside, I guess. Sammy, अपने आप को you know एक ऐसी कंफर्टेबल जगह पे ले जाइए बिकॉज सेशन लंबा चलेगा और आपके करियर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये. So everybody out there, I would really ask you guys to switch on your camera so that we can have a great session and where you can definitely learn a lot of things. And I promise you कि ये सेशन में अगर आपको मजा नहीं आया तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग छोड़िए, मैं हर तरह की ट्रेनिंग छोड़ दूंगा. ये मैं आपको गारंटी देता हूँ. ठीक है, दिस विल नॉट बी अनदर बोरिंग सेशन यू हैव हैड एनी टाइम. This is one of the most interesting session you have ever had. So everybody, Mehak, Kailash, Sana, Siddesh, Vishaka, Yashvi, Bhavesh, Sakshi, Ishita, Liam, Rashid, go forward and switch on your cameras. भाई इतना सुंदर चेहरा है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? What is the issue out there? मैं ये सोचता हूँ मैम एंड सर के जब कॉलेज में आते हैं, सो बेसिकली अभी क्या होता था कि व्हेन वी वर इन स्कूल वी वर गिवन अ पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट होती थी एक लड़की के बगल में जाके बैठ जाओ, एंड दैट यूज्ड टू बी अ पनिशमेंट. Fast forward today, if I think in 2023, if you give me that punishment, I'm ready to take that punishment first of all. So why I'm giving this context, before when you go to college, इतना बन ठन के जाते हैं सारे के सारे, एकदम मतलब पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, एंड प्रोबेबली यू मे आस्क दैट योगेश यार यू आर इनसाइड अ रूम, व्हाई आर यू वेयरिंग सनग्लासेस? सो let me just clarify, there are two reasons I'm wearing the sunglasses. Number one reason is so this is power glasses which has again the effect of sunglasses. That's number one. Second, yeah, so recently, if you know RJ Abhinav, so I met RJ Abhinav in Delhi in one of the colleges where I was giving a speech. So I asked RJ Abhinav the same question. He was wearing sunglasses that day. So I was like, why are you wearing sunglasses? यार दिन है, तुम ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हो, क्यों पहन के रखे हो? तो ही वाज लाइक कि बेटा जिस दिन तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि तुम दिन में भी या रात में भी आराम से सनग्लासेस पहन के घूम सकते हो, तो तुम्हारी जिंदगी उस दिन से, क्योंकि तुमको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है. सो दैट इज व्हाट आई एम हियर टू टीच यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड that basically how you value yourself, how you carry yourself, it's all about you. When you're wearing this glasses, it's somewhere, अब तुमको याद रहेगा एक आदमी आया था, एक ट्रेनर आया था जो मतलब सनग्लासेस पहन के रूम के अंदर हमें पढ़ा रहा था. So that is a recall value you will have for rest of your life. Yes or no? So इनको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है ना कि they are like they cannot unmute or something like that. दिया हुआ है, ठीक है, चलो great. So I'll tell you how the session will proceed. I have a presentation. Now you will tell me. So we'll interact. How we'll tell you. एक तो चैट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स पे इंटरेक्शन होगी. इफ आई एम आस्किंग यू टू से समथिंग, जो भी है वहां पे लिखो. सेकंड थिंग इज यू नो एक रिएक्शन का बटन होता है, जो रिएक्शन आप इंस्टाग्राम पे जाके यू नो अपने ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे जो आप रिएक्शन दबाते हो, वही रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं याद देना, दिल वो वगैरह जो भी व्हाटएवर फील लाइक, खराब तो खराब, अच्छा तो अच्छा. एंड एवरीबडी else who has not switched on your video, I'll tell you, I'll remember by the end of the session. I'll remember Uzeen, Dharti ma'am, then Naveen sir, then Pooja and Viraj, Lavina. ये लोग मुझे याद रहेंगे. Riken, then Ishita, Salman. Okay, probably अब मैं सलमान खान सोचता तो मेरे दिमाग में हमेशा वो सलमान खान आता. अब मैं सलमान खान सोचूंगा तो शायद ये सलमान भी मेरे जहन में आएगा जो मेरे सामने अभी दिख रहा है, विशाखा. So I'll again request you guys कि this is a session about personal branding, branding yourself on LinkedIn, growing your career. Then please switch on your video. Let's make that let's keep that decorum first of all. जिसके जिसके अच्छा ठीक है, ये बता दो मेरे को. लेट्स डू इट लाइक दिस कि जो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा है, व्हाट इज द रियल इशू दैट इज कमिंग. लेट्स राइट डाउन द चैट. चैट में लिख दो कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है. लेट्स सी व्हाट एक्सक्यूजेस यू हैव राइट नाउ टू नॉट स्विच ऑन द वीडियो. Traveling. Okay, Sammy's traveling. Okay, that's great. What excuses the other people have? Sammy, I take your in the office. Oh damn, that's kind of nice. I'm happy. My camera is not working. Shivam. Okay. Let's go ahead. I am at work, sir. I'm out at home, so I can't switch on the video. Okay. Yeah, this is going to be Hey. from students, so definitely they may be working. Few of them may be working, so at Yeah, office. I understand. Sir. No issues. Yeah, ठीक है, that's completely fine. If that is the case, I'll take the case. But again,
क्या होता है कि अपनी लिमिट्स हम जरूर पुश करते हैं जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड आई बिलीव विद एज टाइम पासेस बाय सम वीडियोस में स्विच ऑन स्विच ऑफ देखेंगे हम वो. Okay, now let's come to the presentation. But before coming to the presentation, let me have a check so that everybody is listening. So सब कोई अच्छे से सुन पा रहे हैं मुझे? Voice is loud and clear. If yes, just type yes in the chat box or give a reaction or thumbs up just like sir has given just now. Okay, any of that works. Okay, cool. Now tell me, how do you want the session to be? You want the session to be funny and or informative? You want it to be serious and informative? You want it to be something where we just have a chat across? How do you want it to be? Write down the kind of session you want it to be. You want it to be funny or serious? Let's type it down. Funny or serious? Funny and informative. Okay, everybody chooses that. Okay, do I look like Bussy? In any case, yes, Viraj, like हाँ थोड़े थोड़े लग रहे हैं. Okay, so why do I ask this question? Because a lot of people tell that either you look like Anubhav Singh Bassi, or if I wear the other glasses that I have, I look like Kunal Shah. So that's kind of resonate हो रहे हैं वैसे. But एक बहुत प्यारी बात मैंने इससे सीखी कि लोग मुझे बोल रहे हो तुम बस्सी कैसे लगते हो. किसी को ये नहीं जाके बोलते हो, बस्सी को जाके कभी नहीं बोलेगी तुम योगेश के जैसे लगते हो, because बस्सी is a bigger brand than me. So just trying to tell you, this is the power of personal brand. आज ही मैंने एक post डाला है. If you guys know, again, a lot of things happen around Lakshadweep, Maldives, things happening, a very trending news all around. So you must have seen that's the power of a personal brand. And today I'm not here just to teach you कि LinkedIn पे grow कैसे करना है. I just want to say you, I'll tell you my journey also. So before I start, I think so you should know a little bit about my journey. But let me just put forward the presentation. Okay, are you able to see this screen? Okay, perfect. ठीक है. Just a moment. A lot of people are joining still. Cool. So we'll start with a very short story. Like again, that story is different, but here I'll start with a story. So who am I? Who am I to actually guide you regarding the same? So just like you, I guess you guys in a college of commerce. I've studied from, if you know, Goenka College of Commerce and Business Administration. That's in Calcutta. I've studied from that college. I did my graduation from there, and I belong from a very small town called Jamuria. Probably you'll not be able to find it. It in map. I think it's a very small village. So when I went to the college for the very first time, I was also very excited. Life में क्या मजा आएगा, क्योंकि novels पढ़ते थे उस टाइम, चेतन भगत के novels चलते थे, तो लगता था ऐसी hunky dory life होगी, इस टाइप का चीजें होगा, but वैसा होता नहीं है. College life is way different than what you have ever imagined. So when I went to the college, I realized that the first 2 years were like very plain or something. I didn't do anything. And the third year, I joined NGO, and second year I tried to do a couple of startups, failed multiple times. Then for the first time, I started working with. If you guys are in Mumbai, there used to be a Tag Mango creator pad on Juhu Beach. If you guys have ever been to that particular place, so Tag Mango is a Y Combinator back startup. So I used to work with Divyanshu Damani, who's the current founder of Tag Mango. So we worked for 6 months. I grew a page from 50,000 to 6,50,000 within 5 months in 2018. I'm talking about that time. And then I quit that job. But why did I quit? Because I met an accident in which, I had a corneal tear. So that was the first setback of my life. Secondly, when then I switched to Byju's, and then I worked there in the sales for 4 to 5 years. Kind of it was a grind. I learned a lot about how to sell to people who are strangers, learn to handle team. So it was a great exposure. Then I was like, यार kick नहीं मिल रही है, मजा नहीं आ रहा है, पैसे तो आ रहे, but I need to do something of my own. I always wanted to be famous. I was not getting famous. I was just getting money. So that was the time I have a 5 years of corporate experience in that way. And then I quit my job to do a full-time traveling. When I started full-time traveling, I did a 100 days India tour to understand India में क्या क्या है. But unfortunately, 22वें दिन मेरे टूर के जब मैं मुन्नार में था, I met another accident, and it was where my car brakes failed and my car toppled, and I ended up losing my ring finger. If you see, I don't have a ring finger now. And it's a very recent incident of 1 year ago on November 9th, 2022. Now you'll be like, oh, अब तो सर एकदम अंदर से टूट गए होगे, हार गए होगे, what to do in life, क्या करें आगे, कैसे करें. But you know what?
इंसान के अंदर इफ देयर इज अ कीड़ा ना, वो के एम्बिशन हो के कुछ करना है भैया, ऐसे लाइफ नहीं बिता सकते, तो फिर वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेता है. So I remember I had this hand tied up like this for 3 months. So I started writing on LinkedIn with this hand, sharing my story, whatever I've learned so far in the journey of life. And when I started sharing that, that's how LinkedIn started. And today I have a bootstrapped startup from LinkedIn, which is called Revamp Tribe, where we have generated approximately 40 lakh of revenue just within the last 6 months. And that's like totally out of LinkedIn, right? Then we have another startup called GoTezu, as Urzeen mentioned as well, which is a training and development company. And right now I do a lot of corporate training. तो तुम बिलीव करो, आज से साल भर पहले ना, ये एचआर कॉलेज आप जो हो, आप मुझे कभी नहीं बुलाते. Nobody knew who I was. आज अगर आप मुंबई के कोई इन्फ्लुएंसर से भी पूछोगे कि योगेश अग्रवाल कौन है, भले मेरी फॉलोइंग उनसे कितनी भी कम होगी, they know me, I know them. The reason is that I invested my time to make my brand. And that's why today, आज आपका, I guess, see, I guess why you are here is probably you want to learn how to get promotion. Probably you want to, if you're in office, if you want to learn that how to get a good job, how to network with people, how to make your own brand. कोई ऐसा है जो फेमस नहीं होना चाहता, पैसा नहीं कमाना चाहता? Anyone here जो नहीं चाहता, नहीं यार मैं अभी जहां पर हूं वहां से ऊपर जाऊं? Nobody, right? So that's what is the session about today. We are going to learn exactly that. Okay, if this is a very powerful platform called LinkedIn, how exactly we can make the best out of it. Cool. Are we ready? So that's my journey, guys. Probably that is the reason uh, I would be the right person to teach you. Because यार देखो, बहुत said, but तुमको एक होता है ना, थॉमस, ये हील नहीं होगा. The point is you have to understand that. So if some person has been through that kind of loss, probably I have I have understood the real meaning of life and how you used to go about it. Right. So the story, and then I met the love of my life, somebody who changed my life, and who exactly that person was. So that was none other than LinkedIn, to be precise. Someone with whom like you can have more time, यार. मतलब मुझे लगता है कि जितना टाइम उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ स्पेंड किया, शायद ही मैंने कहीं और स्पेंड किया होगा. So that is where I bring forward to you one of the platform that changed my life, that made me what I am, and that's when after that I lived happily ever after. Now coming to, like, let's have, because see, you guys are from commerce college and you guys have been कुछ थोड़ा बहुत general knowledge पढ़ते होगे. So we will definitely try to test something, but कोई Google use नहीं कर सकता है, ठीक है? Nobody can use a Google or any kind of Google Lens or something. Let me make it very clear. So chat box में थोड़ा सा active हो जाएगी. So my first question is, do you guys know this person? अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना. हम जानते हो तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो. इफ रॉन्ग नेम लिखो, ऐसा कोई, कैन राइट द रॉन्ग नेम आल्सो इफ यू नो द रॉन्ग. Guys, anyone? Nobody knows him? No? Okay. Sam is like, no, I don't know him. Pooja, Lavina, Viraj, Ria, Vishaka, Jackma. Okay. Kind of close. क्योंकि जैकमा के जैसे लगता है ये, बट जैकमा है नहीं. नो. तो most of you, so probably अभी थोड़ी देर बाद तुमको लगेगा, यार how can I forget him, how can I not know him. Anyway, let's go to the next slide. Let's see, maybe इसको तो जानते होगे, पक्का जानते होगे. You know him? No? Try guessing, guys. Try guessing. शायद जानते होगे, शायद शायद शायद. Just a moment, guys. Probably there was a network issue. I'll share the screen again. Share.
Okay, write down in the chat if you guys know this guy. I see no hands. I probably assume that you do not know this guy as well. No, 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 no. That's a no here as well. Just a minute. Yep. Pierre Omidyar. Okay, so one person was able to answer, only one person, and that's the correct answer, guys. For the timing, I would really say it's a correct answer. But now I really want you guys to answer in the chat box. Everybody, who are they? Both the answer. बीच में एंड लगाना है और दोनों का नाम का जवाब देना है. First. Okay, let me see the chat box. So there has been how many answers? मैं बस डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूँ. यहाँ पर अभी तक मेरे को आंसर्स मिल चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 आंसर्स. डैम. 20. सो ऑलमोस्ट 40 में से 20 लोगों ने आंसर दे दिया है. ठीक है. नाउ आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली was the reason for I sent you this. Abhi, I guess you guys can tell me what's the company this guy runs. This Elon Musk. कौन सा company run करते हैं? What is the company this guy is running? What's the company this guy is running? Okay, SpaceX, Tesla. And what about Jeff Bezos? कौन सा company run कर रहा है? Okay, Amazon. So you guys know everything, right? You guys are smart enough to know. Now you will receive the real shock. So the real shock is, because you guys are doing MCOM probably right now, you guys must know there was a company called Yahoo, which is still existing, but used by a lot of less people. And if you know, eBay is also a company still in existence. But you guys don't know them. तुम इन दोनों को नहीं जानते. And they are also founders of this particular branch. Just because Elon Musk and Jeff Bezos have better brands, you know them. आज के वक्त में why I talked about नरेंद्र मोदी is was अगर तुम किसी से पूछोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है तो बोल देता नरेंद्र मोदी. चीफ मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी. बच्चे से पूछो कि गवर्नर कौन है? मोदी जी. अरे that is because the brand is like this. So there's a difference between weak brand and strong brand. तुमको लग रहा होगा कि यार ठीक है यार सर I understood. But again कुछ और एग्जांपल्स समझाइए. Then I would say you कि anybody can write कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं there was someone. Even OLX and Quicker had the same case. Yes, Sammy, you're right. Correct. You are correct on that part. So, बचपन से हम पढ़ते थे कि who is the richest person in the world. बचपन में, अभी नहीं, अभी तो नाम चेंज हो गए. बचपन में हमने किसका नाम पढ़ा था? Right in the chat box. Richest person in the world. I think so. The same name I'll be listening. Yeah. Right, Bill Gates. बचपन में और कुछ नहीं तो हम यही चाहते थे कि यार बिल गेट्स ही बन जाए. एटलीस्ट उतना पैसा कमाना. मम्मी पूछेगी कितना पैसा कमाना है? बिल गेट्स के इतना कमाना है. दैट मच अमीर आई वांट टू बी. सो आई बिलीव व्हाट आई टेल यू कि यही क्लासिक एग्जांपल मैं आपको अगर दूं. So if you guys know, LinkedIn is a platform that was purchased by Microsoft. मतलब अभी Microsoft is the real owner of LinkedIn. ठीक है. Now if you will see, Bill Gates is the like अगर आप बोले सबसे ज्यादा फॉलोड पर्सन लिंक्डइन पे कोई है तो वो बिल गेट्स है with 36 million followers. But if you will see, Microsoft is being followed only 19 million times, like by 19 million people. Bill Gates on Twitter has 61.5 million followers, but the same Bill Gates का जो company है Microsoft has 12.2 million. What I want to say is your personal brand, you as a person growing is more important than the company's brand. You पहले क्या होता था? कंपनीज ग्रो करती थी और फिर आदमी ग्रो करता था. अभी वो कंपनीज आदमी के थ्रू ग्रो करती है. आपको लग रहा है यार सर बहुत पुराना एग्जांपल दे रहे हो. मत दो सर, ये एग्जांपल मजा नहीं आ रहा, बहुत पुराना. तो ठीक है, एक मॉडर्न एग्जांपल ले लेते हैं.
इसको तो सब जानते हैं, आधे लोगों के पास इसका प्रोडक्ट होगा. आई गेस यू गाइस आर यूजिंग बोट, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग बोट ओवर JBL नाउ. किसी ने सोचा था कि JBL का मार्केट डिसरप्ट कर पाएगा? ये नहीं. बट अगेन इट हैपेंड. See, this guy has 2 million followers on LinkedIn. The same guy ka company has say 22K followers. The thing is, you have to understand, if you want to become a successful in life later on, चाहे business शुरू करें या कोई company में जाए, you should have a brand of yourself. You should know how to leverage this platform. And now, whenever I talk about this thing, now you know that what exactly is personal brand. मतलब exactly तुमको समझ आ गया होगा. So anybody who can unmute and tell me what is the definition of a personal brand? Anybody will come. Will be थोड़ा switching to LinkedIn now. Anybody? Pooja, Viraj, Vishaka, Darti, anyone? Like, what is the definition of personal brand? What do you think? क्या होता है personal brand? Let's make it interactive, guys. Let's keep it like one way of. So creating Can a you? name for oneself in the minds of other people. Okay, creating a brand or a name in the minds of other people. Correct, yeah, Pooja. Very correct. Anyone else? Thank you so much, Pooja, for taking the initiative to answer. Anyone? Anybody? यार देखो, जिनकी मजबूरी अलग बात है, बट बाकी जिनकी मजबूरी नहीं, I would really want you guys to interact. Sir, influence the public perception towards our brand or individual. Okay, yeah, influence the public through this game, right? Makes sense, totally makes sense. That's crazy, yeah. बट अभी अगर बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस तो और भी बहुत चीजों से कर सकते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांड, एक बात मैं बोलूंगा जिससे आप अग्री करोगे, विच इज समथिंग दैट इज यू विल ऑलवेज अग्री टू, दैट पर्सनल ब्रांड इज समथिंग व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम. सोच के देखो, एक दोस्त है जो आपको पसंद नहीं है, जब तक वो रूम में रहता है उसके बारे में आप क्या बोलते हो, वर्सेस जब वो रूम से चल जाता है तब उसके बाद आप क्या बोलते हो. जो स्माइल्स आ रही हैं वो स्माइल्स इसलिए आ रही हैं बिकॉज यू नो कि इंटरनली मैं पसंद नहीं करता, उसका ब्रांड अच्छा नहीं है. अगर एक ट्रिप पे जा रहे हैं, दैट गाय इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, यू एंड आई, अरे भाई चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, बट अंदर ही अंदर मन में चल रहा है ये इंसान इतना ज्यादा कंजूस है, कभी पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करता. So that's what the brand is all about. When you think Ratan Tata, you think trust, right? तुम्हारे दिमाग में पहली वर्ड आती है ट्रस्ट. Same way, what I want to teach you, when an employer sees you on LinkedIn, जब वो आपको देखेंगे तो उनके दिमाग में आना चाहिए कि विराज या पूजा या रोहित या लविना कैसे पर्सन है. आर दे ट्रस्टवर्दी? आर दे पैशनेट अबाउट वर्क? शुड आई हायर देम और नॉट? एंड दैट इज व्हाट माय फ्रेंड इज अ पर्सनल ब्रांड. नाउ अब बताते हैं कि ब्रांड बना कैसे सकते हैं. सबसे बड़ी बात है, नहीं, व्हाई डू यू नीड अ पर्सनल ब्रांड? अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई फॉरगॉट कि व्हाई डू यू नीड अ पर्सनल ब्रांड. तो उसका सिंपल रीजन ये है, एक तो चलो, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज सीन द क्रोम एक्सटेंशन में, क्रोम में जो होता है हम लोग ऑफलाइन में खेलते हैं. सो विदाउट पर्सनल ब्रांड ये पिद्दी सा तुम डायनासोर रहोगे, विद पर्सनल ब्रांड आप ऐसे खूंखार की तरह रहोगे. एंड द रीजन फॉर द सेम इज कि लिंक्डइन पे जब हम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं स्पेसिफिकली, लिंक्डइन के ऊपर ये क्लास क्यों है, तो उसका रीजन ये है, आज के वक्त में जो भी कंपनीज आप टारगेट करना चाह रहे हो, जो ड्रीम कंपनी, ओके, लेट्स डू लाइक दिस. इन द चैट बॉक्स प्लीज टाइप आउट द कंपनी you want to. Thank you, Vishaka. I just saw your answer. Creating an identity for yourself. That's the correct answer as well. So, guys, just type down your dream company, which you want to work with on in the chat box. The dream company you want to work with. Okay, Pooja says Tata. Okay. What about others? Google. Yashvi says Google. Okay, I'll show you exactly how you can work there. JP Morgan. यार कंपनीज के नाम तो लिख दो, इतने लोगों की ख्वाहिश होगी. 40 लोग हैं. डिलॉयट, विराज सेज डिलॉयट. Okay, Utsav wants to enter. Rohit says BlackRock, Apple, Sequoia, Goldman Sachs. Okay, so you guys have literally, great ambition in terms of the job you want to take. Now, if you see, out of those 58 million companies, the companies that you named also exist on LinkedIn. उसके recruiter भी LinkedIn पे है, उसका CEO भी LinkedIn पे है. Probably LinkedIn एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उसके सारे एग्जीक्यूटिव मिलेंगे. ठीक है. ट्विटर भी वो लोग जितना नहीं चलाते होंगे उतना LinkedIn को चलाते हैं. So that's what I wanted to explain you. Now, how exactly you want to approach them? कैसे वो करना है, क्या करना है? So what is the first step?
द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ असेसमेंट. पहले जानना कि आप कौन से जॉब के लिए एप्लीकेबल हो. गाइस, लेट मी टेल यू, आई स्टडीड फ्रॉम कॉमर्स, बीकॉम, ऑनर्स अकाउंटिंग एंड finance, but I've never done a job in accounting and finance. In case you think कि हम जिस चीज में पढ़ाई करते हैं उसी में जॉब होना जरूरी है, नहीं. स्किल अलग चीज होती है, और अपने अंदर के जो मेरे पास इंट्यूटिव स्किल्स है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, वो अलग चीज होती है. So what you have to focus upon is having real skills for yourself. Now the point is, how will you self-assess yourself? I will only say, don't worry. If you're not good at self-assessment, बहुत लोग बोलते हैं कि self-assessment हम नहीं कर पाते, हमें नहीं पता कैसे करना होता है. So don't worry, I'm there. मैं संभालूंगा वो चीज. Okay, I'll take care of the same, that how you'll do self-assessment. So ये नोट डाउन कर लीजिए, वेबसाइट आज आपको जाना है बेसिकली 16personalities.com पे ये सेशन के बाद, और जाके 120 क्वेश्चंस आएंगे. इट विल टेक 20 मिनट्स फॉर यू टू आंसर दोस क्वेश्चन, एंड दिस वेबसाइट विल गिव यू एन इनसाइट अबाउट योर पर्सनालिटी टाइप. अब आप बोलोगे कि सर ये मेरे को क्यों टेस्ट देने बोल रहे हैं, इससे मेरे जॉब का क्या रिलेशन है? डू यू हैव द सेम क्वेश्चन इन माइंड? If that is the question, please write down in the chat. Yeah, that's a question hai. Why should I give this test? If you have that question, I'll clarify it and you will know that why. Let me tell you. So basically the reason आपके इतनी सारी qualities आपको पता चलेगी, that this is how the feeling would be. Everybody has watched Sacred Games, I think so, in the time when it was COVID or pre-COVID or whenever. So I believe that's the feeling you will get after giving this test, because this test के last में ये बताएगा. तो टोटल 16 टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं, और वो पर्सनालिटी के अंदर भी दो टाइप होता है, विच इज ए एंड टी. ए मींस असर्टिव, टी मींस टर्बुलेंट. So either you are a turbulent personality, because I'm a turbulent one, and either you are a assertive personality. So basically होता ये है कि ये जब आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप, पर्सनल ब्रांड की सेम पर्सनालिटी टाइप है. तो सपोजेडली आपका पर्सनालिटी टाइप एक एक्स आता है, और वो सेम पर्सनालिटी टाइप बराक ओबामा का था, या मे बी ओपरा विनफ्री का था, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ, राइट? कि हम अभी तक सोच रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट नो, आई कैन डू समथिंग इन लाइफ. सो दैट्स द रीजन आई से दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दिस टेस्ट. वंस यू गिव दिस टेस्ट, देन देयर इज अ सेकंड स्टेप यू हैव टू फॉलो. कोई मेरे को लिख के बता सकता है कि second step होगा? Chat पे let's type it down. What is the second step when it comes for knowing yourself? Self assessment is very important, so that you can know कि interview कहाँ देना है, किस कंपनी में देना है, इतनी job opportunities है. Maybe SWOT analysis. Okay, what's next? But self assessment is kind of SWOT analysis only. कि जो भी threats है, opportunities है, हम सब कुछ self assess करेंगे उसमें. Anything else, guys? But thank you so much, Michelle, for the answer. Guys, a little interactive. Can we make it a little interactive? Anybody? Second step, Pooja, Viraj. Interest, choosing the path on work that will make us happy. So that is all the part of self-assessment. अब इसके बाद हमको one step further लेना है. So when I talk about one step further, what exactly I mean here is very simple. I'll tell you. Is LinkedIn profile optimization. देखो सिंपल सी बात बताते हैं, एक छोटी सी चीज समझाते हैं. There's a rule called the 30-30-30 rule, है ना? So there's a rule called 30-30-30 rule. तो उसके पहले बहुत लोगों का, तो आप लोग का अकाउंट ऐसा होगा जिसमें आप लोग नहीं अपने डीपी लगा के रखे होंगे, अपना अच्छा बैनर नहीं लगा रखे होंगे. 30-30 रूल जो है, 30-30-30, वो रूल क्या कहता है कि बेसिकली नॉट 30-30, आई वुड से रादर 10-10-10 रूल. सो द 10-10-10 रूल, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट्स अबाउट. तो जब आप किसी से 10 मीटर की दूरी पे होते हैं, सो सपोज एटली विराज और पूजा 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, ठीक है?
तो पूजा, आप मेरे को ये बताओ, जब विराज 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, एग्जाम्पल, so what is the first thing that you will notice if it is he is standing 10 meters away from you? What is the first thing that you will notice in that person? So I'll see the physical appearance like the person standing in front of me. Physical appearance, how he's dressed, how exactly the person is dressed, right? तो वो देखेंगे सबसे पहले. So this is clear कि 10 मीटर की दूरी से सबसे पहले हम देखते हैं वो पर्सन वेल ड्रेस्ड है कि नहीं. करेक्ट? दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. सेकंड थिंग क्या होता है, सेकंड 10 की बात करते हैं. तो अब क्या हुआ कि आपने देखा फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, वो बंदा अच्छा वेल ड्रेस्ड है. अब आप उससे 10 फीट की दूरी पे, you are just 10 feet away from that particular person. Now Pooja, what do you notice when you are just 10 feet away? Now you are like even closer. तो क्या नोटिस करेंगे आप सबसे पहले? अब ड्रेस आपको पता चल गया, नहीं अच्छा है, सब कुछ है. Now you are noticing, you want to talk to that person, but before talking, what is something that you will judge him from? So the Think about it. actions, the The way he actions. is conducting himself. Okay, so basically body language in short, right? Body language is what you will notice, right? How is the body language? Is it confident or is it like, so that's the second 10 we talked about. Now you find that body language Viraj ka काफी confident है, ठीक है? Now once Viraj's body language is very confident, you will like, अच्छा ठीक है, मैं और आगे जाती हूँ. Now you can say 10 in guy, and now you want, if you really will judge, body language अच्छा है, देख लिया आपने, ये भी नोटिस कर लिया कि ये पर्सन जो है यू नो ड्रेस्ड भी वेल है. नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग यू विल जज दैट पर्सन फ्रॉम? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट रियल लाइफ सिनेरियो. यू रियली मीटिंग अ पर्सन, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, ड्रेस कॉन्फिडेंट है, अपीयरेंस कॉन्फिडेंट है, सब कुछ अच्छी है, आप बहुत क्लोज हो, और अब आप मतलब लिटरली एक जजमेंट, लास्ट अपना जजमेंट लेने वाले उस पर्सन के लिए, तो क्या जजमेंट रहेगा? So the facial expressions and the approach. Facial expressions, ठीक है. So either it can be facial expression which can be a part of body language or gestures, or again it's about the words he speaks. So probably the words he may be speaking to someone else because maybe वो किसी से बात कर रहे थे या कुछ, तो अब उनके वर्ड से जज करेंगे कैसा बोलता है आदमी, कैसा बात करने का तरीका है, कैसा वर्ड्स यूज करता है. सो यार योगेश, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का? आप ये चीज क्यों बता रहे हो? हम तो लिंक्डइन की बात कर रहे हैं, आप तो बाहर के वर्ल्ड में चले गए. दोस्त, इसका इंपॉर्टेंस ये है, जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी कोई आता है तो वो 10-10-10 रूल ही फॉलो करता है. द फर्स्ट थिंग दे जज यू फ्रॉम इज योर अपीयरेंस इन प्रोफाइल. आपका प्रोफाइल, लोग बहुत लोगों को ढूंढ रहे होगे सेशन लेने के लिए. अगर मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं रहता, द पर्सन whosoever approached me, I guess Riya approached me, so Riya मेरे को क्या बोला सेशन के लिए? थिंक अबाउट इट अगेन. तो फर्स्ट थिंग, प्रोफाइल जो है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए. सेकंड चीज जो है वो हमने बोले थे बॉडी लैंग्वेज. अब यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज तो हो नहीं सकती प्रोफाइल में. तो प्रोफाइल में नेक्स्ट चीज जो हम जज करते हैं इज बेसिकली कि उस पर्सन का मतलब एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, क्या लिख के रखा है प्रोफाइल में उसने, राइट? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट रिटन इन द प्रोफाइल. एंड थर्ड 10 होता है कि ये आदमी जो अपना खुद का कंटेंट पोस्ट कर रहा है, जो बहुत लोग नहीं करते. थर्ड 10 तो आदमी करता ही नहीं, कंटेंट पोस्ट ही नहीं करता है, वो था थर्ड 10. दैट्स हाउ. आपने अभी बोला कि मैं गोल्डमैन सैक या गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट पे जाना चाहता हूँ. एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, छोटी सी ट्रिक बताता हूँ. सो विराज, आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है विराज? व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी? डिलॉयट. डिलॉयट. विराज, डिलॉयट का फाउंडर कौन है? सर आइडिया नहीं नहीं. पता? नहीं आइडिया. आप सोचो, अधिकतर लोग को आइडिया नहीं होगा डिलॉयट का फाउंडर कौन है. अधिकतर लोग को आइडिया नहीं होगा, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, बिकॉज इज अ बिग फोर एंड एवरीबडी इज लाइक बिग फोर है, बिग फोर है, वो जानते हैं. अब ये एक्सेप्शनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देख लो, अगर आप ट्राई करोगे वर्क करेगा. आप डिलॉयट के फाउंडर का नाम फाइंड आउट करते हो, उसकी जर्नी जानते हो, डिलॉयट कैसे बना वो जानते हो, उसकी कॉन्टेंट बना के लिख देते हो. आप लिखा के ले लो, जितने भी डिलॉयट के एम्प्लॉयज हैं
वो आपको नोटिस करेंगे। इनफैक्ट कोई भरोसा नहीं, डिलॉयट का फाउंडर आके आपको खुद भी मैसेज डाल दे। दैट्स द पावर ऑफ लिंक्डइन। यू विल सी अ लॉट ऑफ टाइम कुणाल शाह, अमन गुप्ता, जाके फिर एनीवन जो टॉक अबाउट ऑल द इन्फ्लुएंसर्स हु आर आउट देयर, वो खुद जाके जिनको हायर करना होता है उनसे चैट्स पे बात करते हैं। इज माय वॉइस क्रैकिंग? इज इट क्रैकिंग राइट नाउ एज वेल और इज इट गुड नाउ? Probably there can be a network So issue, earlier but it was cracking. अभी ठीक है। Whenever it cracks, na, just post me a message that it is okay. Kaizen is like, yes, it is. Is it still cracking? Like, should I go a little slow if it works? uh, अगर if it is cracking तो बोलो yes, नहीं तो बोलो no, so that we can proceed further. Okay, now it's fine. ठीक है, let's go ahead. Now, okay. अभी आप में से जिनका भी ऐसा है प्रोफाइल, I have only one thing to say to you, nothing else. This is what I want to say to you. अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है, कहाँ से आते हो यार आप लोग? इतना फीचर्स दिया है लिंक्डइन ने, एक दिन भी बैठ के अपडेट कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब अपडेट में क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोबेबली दिस वाज हाउ माय प्रोफाइल लुक थोड़ा टाइम पहले। अभी तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा और रिवैम्प किया है। बट द पॉइंट इज व्हाट डू यू नीड इन द प्रोफाइल, दैट्स व्हाट आई विल से। कि जो ऊपर वाला पार्ट, इफ यू वांट आई कैन शो यू माय करंट प्रोफाइल एंड दैट वुड क्रिएट अ बेटर डिफरेंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोफाइल कैसा दिखना चाहिए। So let me show you my profile. If you come to my current profile that I have, let me see if I can show you that. Okay, so that's my current profile. If you see, so मेरे current profile में आप देखोगे एक चीज notice करोगे that in my current profile I have only एक minute. हाँ, so in my current profile, if you see, I have a picture that has changed. अब बोलोगे sir, why is this not a professional picture now anymore? The reason is LinkedIn is no more a very professional platform. It's a platform जहाँ पर ना you will find a lot of varieties. You have to look forward. अपनी personality आपको दिखानी है. So that's why I have this picture. ठीक है, that's number one. Second thing is the banner. अब banner में मैंने बनाया हुआ है, मैंने 30 cities गया हूँ, 80 plus talks दिए हैं, 50 से ऊपर clients है मेरे, 100 से ऊपर testimonials है, ये मैंने बताया है so that people can know what I do and मेरे clients कहाँ कहाँ feature हुए हैं और मेरे company का logo. आप अगर खुद एक पर्सन है who wants to get hired, probably you will write that I can help you if you want to go into business analytics, you will be like, I'll help you simplify your business like a back of the hand. So those kind of lines you have to use in the banner or something of that sort, that is very attractive for people. If you want to become a business analyst, ये जो आपकी headline है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान जब आपको सर्च करता है, ये सर्च बार पे, अगर सर्च बार पे बिजनेस एनालिस्ट सर्च कर रहा है या कोई पर्सन बिजनेस एनालिस्ट की जगह मे बी यू नो एग्जांपल ऑडिट असिस्टेंट सर्च कर रहा है या वॉट एवर दे आर सर्चिंग, ये जो कीवर्ड या एसईओ होता है ना वो यहाँ से होता है। सो दैट इज वाई मैं, क्योंकि एज अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट जब कोई सर्च करे तो मैं आना चाहता हूँ, तो मैंने इसको फर्स्ट में रखा है। सो ऑप्टिमाइजेशन में सबसे नेसेसरी ये चीज है। अब आप बोलोगे सर ये बैनर कहाँ से बना सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ये कैनवा आपको दिख रहा है। कैनवा एक फ्री सॉफ्टवेयर, आप सबको पता होगा। टुडे गो फॉरवर्ड, कैनवा पे जाइए, पेज बैनर, दैट्स इट। You will have a hell lot of templates that can help you for free. LinkedIn banner में गए, ये देखिए आपके पास how many varieties of banners are there through which you can build. It is like 1,03,000 templates. इसमें से कोई भी टेम्पलेट उठाइए और उसमें से जो सकते हैं लिंक्डइन पे। सो योर प्रॉब्लम ऑफ ब्रांडिंग योर सेल्फ एट द स्टार्टिंग, जैसे ये बहुत सुंदर है, वैसे करके आपको जो अच्छा लगे, ये बहुत सुंदर है। सो द लॉट ऑफ बैनर विच लुक्स रियली क्लासी, आप कोई भी उसको यूज करके कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट लिंक्डइन बैनर। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? अभी में वो मेंशन कर देना है, मेंशन करने के बाद दिस इज पार्ट ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब मेरे केस में आई डू अ लिटिल बिट ऑफ सेलिंग, सो दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस all these things. In your case you will mention your certificates that you have. Agar you have any certificate section में वो आना चाहिए. Remember, if you cannot afford to build the website, just build a free LinkedIn profile. That will be more than enough. I will always say that a free LinkedIn profile is much better than
not having a profile at all. ठीक है? Uh, So make yeah actually, बताइए बताइए. your voice is cracking, and we couldn't hear you. Okay, fine. Thank you so much for saying that. एक minute. Let me see if I can switch my network. If there's a problem. Just a moment, baby. I'll try to go a little slow with my, the way I speak. Probably that will help. वो cracking वाली चीज problem नहीं होगी उसके बाद. So that's the best I can try as of now, if that works. Cool. Can everybody hear me? Yes, Okay. sir. Fine. Now, next what we'll do, we'll go to the experience section. जैसे ये जो experience है, you can leave this. Come down. You will see experience of me working at Byju's. So what you do, this is something that you have to understand. In the experience, generally people do not do that. But what you should do is put some numbers at how much revenue you have generated. अगर experience नहीं है, तो ये same चीज आपने college में बताइए. What are the projects you have worked upon? कितने लोगों के साथ काम किया? क्या उसका result generated हुआ? And always use a verb when you start. Okay, generated, managed, facilitated. That's how you write it. So once you start doing this, any recruiter who's visiting your profile, it becomes very easy for that particular person to find you. Now, first of all, ये बताइए, how many of you here are already working in some company? जो काम कर रहे हैं वो like just working करके लिख दो, और जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट लिख दो, इस पे चैट पे लिख दो. वर्किंग लिख दो, जो स्टूडेंट अभी है वो स्टूडेंट लिख दो, so that I can take you to the next phase, practical phase of how to find the job. Okay, Viraj is working, student, working, student. ठीक है. So मैं आपको बहुत मस्त एक तरीका दिखाऊं. आप लोगों का कौन सा कॉलेज है? एचआर कॉलेज है ना? तो एक किसी का प्रोफाइल खोलते हैं. विराज, आपका प्रोफाइल है लिंक्डइन पे? डू हैव अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन? Yes, sir. ओके, आई विल स्टॉप माय वीडियो वंस, बिकॉज अगर बैंडविड्थ इशू आ रहा है तो वो क्रैक नहीं होगी बहुत. एक मिनट. तो विराज, क्या प्रोफाइल है? विराज घालके, GHA editing. हाँ. ये है, दिस इज योर प्रोफाइल, राइट? Yes. Yes. अरे, today was CA result. You are giving the enter. That's great. Okay, you already sent me a request. I've accepted it. So अब विराज के प्रोफाइल से दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. ठीक है, लेट्स गो लाइक दिस. सो विराज इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफाइल पिक्चर, बट द प्रॉब्लम इज दिस प्रोफाइल पिक्चर में हम उसका फेस नहीं देख पा रहे हैं. सो विराज, वन चेंज दैट यू विल डू, सो सारे लोग नोट्स बनाएंगे इस चीज के, बिकॉज मैं आपको जिंदगी की ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, शायद जो चेंज करने के बाद आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, है ना? So I have made brands for a lot of Shark Tank people who have received investment in Shark Tank as well. So the reason they have received investment was, again, they had a very strong LinkedIn profile and social presence also, and then they went to pitch. So वो बहुत जरूरी होती है. आपको पता होगा कि एक हेयर एक्सटेंशन प्रोडक्ट था मिसेस गुलाटी का. So वो Instagram पे अपना ब्रांड बना के रखी थी, तब जाके उन्हें एक फंडिंग मिली थी. So this is a very important part you have to understand. So that's the first thing, or for everybody, you should have a profile picture जिसमें आपका फेस क्लियरली दिखे, है ना? और रीसेंट प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए एकदम, जिसमें आपका फेस दिखे, थोड़ी सी प्रोफेशनल अगर हो तो प्रोफेशनल, वरना आप जैसे नॉर्मल है वैसे. तो वो पहला चेंज आएगा. सेकेंड है जो आपका बैनर है. द बैनर इज अ वेरी लार्ज रियल स्टेट. इसको आप बहुत क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं. तो जो आज मैंने बताया, कैनवा पे जाइए, कैनवा पे जाके जो आप करते हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, वहां से उसको एक्सचेंज करिए. ठीक है, दैट इज द सेकेंड थिंग. थर्ड है, विराज ने अपनी प्रोफाइल वेरीफाई की है, सो आई वुड से एवरीबडी शुड हैव देयर प्रोफाइल वेरीफाइड थ्रू हाइपर्च यूजिंग गवर्नमेंट आईडी. इवन आई हैव डन द सेम. इससे आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है. फोर्थ थिंग यू हैव टू डू इज ये जो आपने लिखा है, सीए इंटर, एचआर कॉलेज, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो आपने लिखा है, सो बेसिकली आप जो कीवर्ड्स के लिए, देखो, अब लोग सीए सर्च करेंगे तो आप आओगे, एचआर कॉलेज सर्च करोगे तो आप आओगे. आप क्या चीज से सर्च होना चाहते हो? आप एज अ कंसल्टेंट सर्च होना चाहते हो, तो वो कीवर्ड्स को सिर्फ यूज करिए. बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स यूज मत करिए कि लिंक्डइन कंफ्यूज हो जाए, दैट वेयर शुड वी एक्चुअली give you the search result. So that is very important. So please make sure that changes is being done. So now this is very beautiful. So Viraj has a photo with this guy who's very famous in the stock market industry in the news channel. So he has used this in the featured section. So good work with featured section here, Viraj. Now
coming to the about section, your about section can be much better. I see that this is a I guess probably ChatGPT generated about section, uh, right? No, Viraj, yes or no? Right? Yes, sir. Yes, right. So, for those who guys who don't know, I am a AI trainer myself, so I can just at a site I can see that कौन सा chat GPT generated है, क्योंकि हमारे clients के लिए हम लिखते हैं ना, तो हमको जब राइटर्स लिख के देते तो हम तुरंत देख के बता देंगे कि ये चैट जीपीटी से लिखा है कि नहीं लिखा है. सो दिस इज अ चैट जीपीटी जनरेटेड ये, इसमें अपना ह्यूमन टच लाइए. इट्स अ वन टाइम यू आर राइटिंग, देन मेक श्योर दैट यू मेक इट अ लिटिल ह्यूमन रादर देन चैट जीपीटी जनरेटेड. ठीक है. Your experience section is very beautifully written, very beautifully updated. You have updated the skills and everything, but यहाँ पर लिखा होना चाहिए. जो आप कुछ लिख नहीं रहे, थोड़ा मोड़ा ट्राई करिए यहाँ पर अगर लिख पाए आप इसके डिस्क्रिप्शन. ठीक है. एनएसएस है, सब कुछ है. अभी देखो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल बी लर्निंग. टू ट्रिक्स आई विल बी जॉब इन अ ड्रीम कंपनी वन. सो विराज की ड्रीम कंपनी क्या है? डिलॉयट है, राइट? अभी आप डिलॉयट के साथ काम कर रहे हैं क्या? No, नहीं sir. काम No, कर रहे sir. हैं. Now everybody who wants to work in the dream company, I'm showing you the way through which you can land the job in your dream company. If you're ready to learn, then say a yes first. Yes नहीं आएगा तो हम नहीं सिखाएंगे. Everybody, yes, yes, yes in the chat box. Okay, okay, okay. 10 yes आया. Okay, I want more, I want more. Yes, 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 yes. Cool. So HR college के पेज पे आ जाएंगे. First of all, once you are on the page of HR college, what you have to do now is you have to go to alumni. कहाँ जाना है? You have to go to alumni. So there are 6 sections here: home, about, post, jobs, alumni, insights. Go to alumni. Now आप देख लीजिए, 1900 से लेकर 2024 के बीच में 152 लोग आप ही के कॉलेज से डिलॉयट में काम करते हैं और आपको पता नहीं है. Now, when you click on Deloitte, these are the people who are working in Deloitte from your college. देख लीजिए आप. All you have to do is send them a template saying, "Hey Shubham, this is Viraj. We share the same, like you are the alumni of the college in which I'm studying right now, or we share the same alma mater of the college, and I'm inspired by the way you have grown yourself." Right? You will appreciate that person. Then you will say that I was really looking forward to work with Deloitte, and I would really appreciate if you can refer me. Please find my resume attached. अगर आप ये 300 लोग जो हैं इनको मैसेज डालोगे तो चांसेस है कि नहीं कि आपको रेफर करेंगे? यस और नो गाइस इन द चैट बॉक्स? यस और नो? यस 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 और नो? यस, वेरी इजी, यस डेफिनेटली. है ना? हुआ? एक तरीका अच्छा लगा. लर्न समथिंग न्यू. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. एलुमनाई सेक्शन का यूज करके आप अपने ही कॉलेज के एलुमनाई से कनेक्ट करके वहां से आप क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू इज गेट द जॉब. Now, I'll tell you again one more thing. Let us understand. When you go to alumni, you can click on see more. You can see almost महाराष्ट्र में 7,000 लोग काम कर रहे हैं, 6,000 लोग मतलब मुंबई एरिया में मेनली लोग काम कर रहे हैं. अगर आपको मैंने यार सर आई वांट टू सेटल इन यूएस, so you have people from your college who are in US also, who are living in US. You have people from your college who are living in London. It is so easy that you can connect with them. कोई मॉर्गन स्टैनली में जाना चाहता है, देखिए आपके कॉलेज से 35 लोग मॉर्गन स्टैनली में पढ़ाई कर रहे हैं, जाके नेटवर्क करिए इनके साथ. राइट? सो दैट्स हाउ यू डू द नेटवर्किंग पार्ट इन द फर्स्ट को. राइट? दैट इज नंबर 1. ठीक है? गॉट इट? अंडरस्टूड? तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देंगे और इसको करके आपको नेटवर्क पहले यहाँ से शुरू करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक एवर. अब मैं उनके लिए बताता हूँ, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स है, जो वर्किंग नहीं कर रहे हैं. ठीक है? नाउ आई टेल यू फॉर समवन हु इज वर्किंग. ठीक है? लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. ठीक है? मैं बताता हूँ क्या करना है. सो कोई ऐसा है जो वर्क कर रहा है ऑलरेडी? विराज ही है. विराज कहाँ काम कर रहे हो? वेर आर यू वर्किंग राइट नाउ? सर स्मॉल फॉर्म है सम्यक सॉल्यूशंस पे. हेलो सॉरी, कहाँ पे? सर, स्मॉल फॉर्म है सम्यक सॉल्यूशंस पे. समय सम सोल्यूशन. अच्छा, ठीक है. आप नाम बताइएगा 1 मिनट रुक जाइए जब मैं यहाँ टाइप करूंगा. सो व्हाट आई डिड, आई केम टू सर्च बार, आई प्रेस्ड एन एंटर. कुछ भी नहीं लिखा, एंटर टाइप किया. दिस इज सेकंड थिंग आई एम टीचिंग गाइस. अगेन फॉलो इट प्रॉपर्ली.
एंटर टाइप करने के बाद मैंने पीपल पे क्लिक किया. आई शुड क्लिक ऑन पीपल. वंस आई क्लिक्ड ऑन पीपल, आई गो टू ऑल फिल्टर्स. कहां पर जाना है? ऑल फिल्टर्स. ऑल फिल्टर्स में जाके थोड़ा सा नीचे जाऊंगा और नीचे जाके करंट कंपनी. करंट कंपनी क्या है विराज आपकी? सम्यक सॉल्यूशंस. समेक सोल्यूशन. तो करंट कंपनी में समेक सोल्यूशन को टाइप नहीं करना है. किसको टाइप करना है? पास्ट कंपनी में टाइप करना है. ध्यान से देखो. समेक्स, ये है नाम, बताओ. SUMMEX, SAMYAK. यही है ना? SAMYYAK. YAK. अच्छा, सम्यक सोल्यूशंस. ठीक है. ये ये है राइट. ठीक है. Yes, yes. अब देखो, मैंने सम्यक सोल्यूशन टाइप कर दिया. अब विराज ने मुझे कहा कि यार योगेश मेरे को डिलॉयट पे जाना है. मैंने करंट कंपनी में डिलॉयट टाइप किया. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आई वेंट टू सर्च बार, आई प्रेस्ड एंटर, एंटर ब्लैंक करके दबाया. आई वेंट टू पीपल, पीपल में जाके ऑल फिल्टर पे आया. आई केम टू ऑल फिल्टर. आफ्टर कमिंग टू ऑल फिल्टर, आई आई एम क्लिकिंग ऑन पास्ट कंपनी में सम्यक सोल्यूशन, प्रेजेंट कंपनी में डिलॉयट. बट ये सिर्फ प्रीमियम के लिए. अब बोलोगे सर प्रीमियम कहाँ से लेके आए? तो देर आर टू वेज यू कैन गेट द प्रीमियम. नंबर वन इज, आई गेस स्टूडेंट आईडी पे पहले प्रीमियम हो रहा था, 6 मंथ्स का आ रहा था. अगर आप स्टूडेंट आईडी से कुछ करोगे एक्टिवेशन, मे बी दे वर गिविंग, या 1 महीने का एक बार आप ट्रायल ले सकते हो, उसमें शायद पैसे नहीं लगते. सो अगेन दैट इज हाउ यू कैन डू इट. फिर जब आप शो रिजल्ट में क्लिक करोगे, ये देख लीजिए यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया. अब इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्या क्यों नहीं आया. सो बेसिकली विराज जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, सामिक सोल्यूशन, उसमें ऐसे कोई लोग नहीं थे जो स्विच करके डिलॉयट गए. बट अब मैं अपनी हूँ कि बायजूस से, लाइक द कंपनी आई वाज देयर वाज इन बायजूस. सो आई विल टाइप पास्ट कंपनी में, आई विल टाइप बायजूस. सी, एंड माय ड्रीम कंपनी में बी आई विल टेक एक रियल एस्टेट कंपनी लेते हैं, स्क्वायर यार्ड्स. स्क्वायर यार्ड्स. ठीक है. दोनों दोनों में सेल्स करनी होती है, तो मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ. और मैंने डिलॉयड भी रख लिया है. और तो मैंने दिखाया कि सो बेसिकली इस फिल्टर का मतलब ये होता है कि द कंपनी यू हैव वर्कड इन द पास्ट विल बी बायजूस, द कंपनी यू आर वर्किंग राइट नाउ इज स्क्वायर यार्ड्स. तो इसमें सारे वो लोग के रिजल्ट आ जाएंगे जिन्होंने बायजूस क्विट करके. ये 629 वो लोग हैं जो बायजूस क्विट करके या तो स्क्वायर यार्ड्स में काम कर रहे हैं या तो डिलॉयट में काम कर रहे हैं. तो मैं अगर इनको एक कनेक्शन मैसेज भेजूंगा दैट हाय सौरभ, we have been colleagues who have not met in the same company, so we are both Baijuites, and I see you have shifted to Square Yards. I was looking forward to switch to Square Yards, so I really appreciate if you can forward my resume to HR. That's how you switch. Got it? So ये दूसरा तरीका है. So one तरीका I taught for the people who are already in college. अब तुम बोलोगे यार सर ये तो, अगर मैं HR कॉलेज में हूँ, मेरे को गूगल में जाना और HR कॉलेज से कोई गूगल में नहीं गया, तब क्या करेंगे? You might have this question, and there are people who have not went to Google from HR college. So what you have to do is first of all see, मतलब बहुत लोग अपडेट नहीं करते, हो सकता है गूगल में काम कर रहे होंगे. But what you have to do there is very simple. Again, there also no rocket science. Is you have to connect directly with the people who are working at Google by sending them templatized message. That's how you do it. ठीक है? So that is the way, slowly and steadily you will get your hack there, right? So हम आ जाते हैं वापस इस पे, and we'll go ahead and try to understand this more from the presentation as well कि और क्या steps है जिस पे हमको focus करना चाहिए. So LinkedIn optimization, everybody understood how we'll optimize the profile? Any doubt, anyone? If yes, then please send me. Profile optimization मैंने बता दिया क्या क्या चीज आपको करनी है, which is like first you have to start from above, आपके banner, आपका profile picture and lot of those things and all, and then probably you have to shift downwards. So if you have any doubt, you can send me a DM also. I can send you. Okay, fine. What I'll do is I can send you my profile if in case you want to connect with me, because without connection probably you will not be able to send me any messages. So what I'll do is I will send that to you. Okay. If you want to connect with me on LinkedIn, you can send me a request here or follow whatsoever you need. Now let's proceed. ठीक है.
सो ये हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. मैंने आपको बता दिया व्हाट यू हैव टू डू इन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. दिस इज व्हाट इट लुक्स बिफोर ऑप्टिमाइजेशन एंड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन. दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग यू विल गेट. एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? तो थर्ड स्टेप बेसिकली क्या है? 5 सीज है जिसको मास्टर करना पड़ेगा. सी, 5 ऐसी चीज जो सी से शुरू होती है. तो मेरे को लिख के बताइए कमेंट में कि वो 5 सी क्या क्या है. विच आर द 5 सीज? I want you guys to answer. Think and answer. What are the 5 C's you have to master in order to grow on LinkedIn? Let's see if you guys can write it. Creativity. Okay, 1 C is revealed. Very good, Viraj. Keep it up. Communication skills. Okay, that is a new C I will include for sure. That is good. Good. I have not added communication, but yeah. Second is revealed content. Okay, second C is revealed again. Michelle is clarity. Clarity is also good. That I will that I will get as seventh C. Sixth C मैंने कर दिया है. Seventh भी गया. Nice confidence. Nice coordination. Nice. यहाँ पर वो 5 सी different है, but still good answers, guys. Good answer. Let's see more. Let's see. Concise. Okay, we have to be concise. Michelle again. Very creative answer. Okay, cool. So, a lot of you guys have tried to answer. I'll reveal one by one now. So the first C is content. So content क्यों? Content is the free way of getting everybody, मतलब yourself everywhere. मैं आपको बहुत एक सिंपल चीज बता रहा हूँ. आप बोलोगे मेरे को फेमस नहीं है, मैं कोई नहीं जानता है, मेरे को कुछ नहीं है. आज सीए का रिजल्ट निकला है. विराज एक सीए इंटर में. विराज ने एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट अगर सीए के बारे में लिख दिया, विराज कल वायरल हो जाएगा एंड एवरीबडी विल नो विराज भाई के. आप ट्राई करके देख लो. यू मे हैव 200 फॉलोअर्स राइट नाउ. आफ्टर माई after having a word with me, whatever you have done, like you just go and write a very emotional post about CA, how you feel about the results that has taken out. आपने किसी दोस्त से बात किया, वो कैसा फील कर रहा था, आप एक स्टोरी लिखिए. और विराज अगर आप वायरल नहीं हुए तो मैं लिंक्डइन छोड़ दूंगा. आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 200 वाला वायरल नहीं जाएगा, 20,000 फॉलोअर है सर, आप वायरल चल जाओगे, नहीं होता ऐसा. The only difference between me and you is that I have authority on LinkedIn because I have 20,000 loyal people following me. In your case, you will get viral one day, but not every single day because आपने एक reactive post बनाया है, एक topic trending है, उस पे आपने react किया. So that is very important. Content is the first C that will get you places. और content का सीन ये है ना, अगर आप बोलोगे content नहीं है आपके पास, तो बेटा देखो क्या है, content होता सबके पास है, देता कोई नहीं. वही चीज है. आपके पास इतने गॉसिप्स है अपने लाइफ के जो आप बैठ के ना अपने दोस्त के साथ कर लोगे बहुत बार. बैठ के यू विल डू अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, बट यू विल नेवर वांट उसको आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, है ना. तो आई वाज आल्सो लाइक दैट टिल अ मेंटोर केम टू मी एंड सेड दैट आपका कोई ऐसा स्टोरी जो होगा ना, आपको शेयर करने में मजा आएगा. जिसको मतलब अगर आप ये बना लो कि आपके लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, यू वांट टू शेयर इट. अगर आप ऐसा मन में बना लिए ना, तब आप हमेशा वो स्टोरी को, वो मोमेंट को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से जियोगे. सो दैट इज व्हाट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट. ठीक है. Second thing is when you talk about second C, the second C is always something that is very important, which is comment. वही comment जो आप अधिकतर क्लासरूम में पास जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं या कॉलिग्स पे पास करते हैं, वही कमेंट यहाँ करना है. बट जो कमेंटिंग जोन है वहां पर करना है. एंड इफ यू विल बी लाइक कि नहीं सर कमेंट से क्या होगा, कमेंट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा. सो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, देर आर पीपल. एक पर्सन है, मैं प्रोफाइल उनका बता दे रहा हूँ. हिज नेम इज क्रेग डेविस. CRAIGDAVIS. दिस गाय हैज 15,000 फॉलोअर्स जस्ट बाय कमेंटिंग. मतलब उसने अभी कंटेंट बनाना शुरू किया है. वो पहले सिर्फ कमेंट करता था. 10,000 फॉलोअर्स उसने सिर्फ कमेंट करके बनाया. सो इन केस यू फील दैट कमेंटिंग इज समथिंग दैट इज baseless, then go and follow this guy and you will know the meaning of what commenting is. And when you comment, उसमें हमको ये comment नहीं चाहिए, love this, great share, I like your picture, lovely picture, good, very good. No, not these comments. I want proper comments to be there. Just a moment. No, I'm in a session. मैं कॉल करता हूँ सेशन के बाद. हाँ जी, ठीक है. So if I see these kind of comment, this is what I will feel like एकदम अश्लील moment. Third C is collaboration. आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इतने सारे C's आंसर किया, I never talked about collaboration.
So I'll tell you very beautiful thing. So supposedly collaboration हम कैसे करेंगे? So we will try all the C's today. सारा हम try कर लेंगे. So मैंने LinkedIn पे एक पोस्ट डाल के रखा है. So आप पहला चीज क्या करोगे कि आप first of all everybody today will make a content after this session is over. You can take the screenshot of the session that is taking place or whatsoever you want, and you will make a content. So हम इसको practically करेंगे. पहले तो हमको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है. सब लोग अपनी अपनी पिक्चर एक लगा लेंगे अच्छी सी प्रोफाइल पे, एक बैनर बना लेंगे. अगर नहीं भी बनाए तो सबसे पहले ये एक्शन ले लेंगे. तो आप क्या करोगे, यू विल मेक अ कंटेंट टुडे, और वो कंटेंट जाके आप लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन. एक समरी बना लिया. जिस पर्सन की समरी सबसे अच्छी होगी, आई विल पर्सनली हेल्प हिम ऑडिट एंड स्केल हिज अकाउंट इन टर्म्स ऑफ मतलब कि क्या क्या करना है अकाउंट में चेंजेस. मैं ऑडिट करने में हेल्प करूंगा. जिसकी समरी मेरे को सबसे अच्छी लगी, 1% आई विल चूज फॉर श्योर. सो आपको कुछ नहीं करना है, एक कंटेंट बनाना है. कंटेंट बना के मेरे को टैग कर दीजिएगा कि पता चल रहा है कौन कौन बनाया है. मेरे को टैग कर लीजिएगा. टैग करके पोस्ट करिए, मैं कमेंट करूंगा उस पर. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सो दैट आई कैन सी क्रिएटिवली कंटेंट बनाना है. ठीक है, पहला चीज हो गया ये कंटेंट बनाना है. सेकंड आप क्या करोगे, मैंने आज एक पोस्ट डाला है, आप लोग वो पोस्ट पे जाके कमेंट करेंगे. जब कमेंट करेंगे तो उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा आपको. इससे क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी चीज है, वो कमेंट बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए. तो आप कमेंटिंग सीखोगे वहां. थर्ड, कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन क्या होता है? सो बेसिकली कोलैबोरेशन होता है, सोचो सोचो मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ. मैं बेसिकली 20,000 22,000 फॉलोअर्स पे हूँ वहां पे लिंक्डइन पे. आप 200 1000 या मे बी 500 फॉलोअर पे हो. अगर मैंने आपके बारे में लिख के कुछ पोस्ट कर दिया ना, ओके सर, द स्क्रीन यू आर शेयरिंग इज वेरी मच zoomed, इज इट? आई गेस इट्स नॉर्मल ओनली आर्यन, लाइक ऐसा ही स्क्रीन ही है पूरा. आई गेस वो मोबाइल पे लग रहा होगा. एवरीबडी लाइक, इज इट द प्रॉब्लम, इज द स्क्रीन वेरी zoomed और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नो, ओके, इट्स नॉर्मल. ठीक है, फाइन. सो पहला चीज वो हो गया. सो व्हाट यू विल डू कोलैबोरेशन में. सो अगर मैं अचानक से एक स्टोरी बनाऊंगा that I met a guy called Viraj who switched on his video in the whole session despite everybody switched it off. And अगर मैं बनाता हूँ and then मैं एक तारीफ भरा विराज के लिए लिखता हूँ एक पोस्ट, तो यार विराज के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे 110%, just because he collaborated with me on that post. And I really appreciate the feeling of Viraj doing that. बिकॉज मतलब आई कुड हैव चोजन के नहीं यार, चलो यार कोई नहीं, अब बोल रहा है, मैं कोई है नहीं सेशन में, आई कुड हैव गॉन. बट again, so that's my professionalism, that okay, I should make sure if I'm conditioned to switch on the camera, I'll switch it on. Again, thank you so much Viraj for being around the whole session and making it interactive for me to talk. So now when we talk about the collaboration, what we have to do is very simple. We have to make sure that we are collaborating with the people out there, जो भी अच्छे फॉलोअर्स पे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, डिफरेंट डीयू से हैं, और मुंबई में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं. इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, वन ऑफ द राइटर्स हु राइट फॉर मी और एंड माय क्लाइंट्स इज फ्रॉम अ कॉलेज इन मुंबई, and she has been paid really well from my end in terms of writing. So that's how she has grown her brand as well. So third is collaboration that you will do. अब जब कोलैबोरेशन में इंट्रोवर्ट लोग जो उनके लिए तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, और शायद उनके मन में यही चीज होगी, मेरी एक्सपर्टीज नहीं, आई एम आउट. दैट्स व्हाट दे वुड फील. फोर्थ जो है वो है क्रिएटिविटी. सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव. अब देखो, क्रिएटिविटी का सिंपल सा मैं एक फंडा समझा देता हूँ आपको. क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा कुछ नया ही सोचना पड़ेगा. If you copy from one person, that is plagiarism. But if you copy from 100 and then combine, that is also creativity only. So ऐसा कभी मत सोचिएगा that every you have to come up with a new idea. आज के टाइम पे कंटेंट के जमाना में नया आइडिया लाना बहुत मुश्किल है, पहले इजी हुआ करता था. So you have to understand, for you the creativity should go in that way. So that is the fourth C when I talk about. And when I talk about the fifth C, again, ChatGPT ये विराज आपके लिए, okay? Like the people who are generating through ChatGPT and saying that, okay, so मैं यही बोलना चाहता हूँ तुम्हें कि ChatGPT कंटेंट मत बनाना. ठीक है. नेक्स्ट, द फिफ्थ सी इज कंसिस्टेंसी. आज किए, ठीक है, एचआर कॉलेज में सेशन करा दिया, आज मजा आ गया, आज मोटिवेशन रहा, कल से वापस सेम चीज चालू. तो आपकी लाइफ भी वैसी रहेगी. अगर आपको लग रहा है कि मैंने जब बोला, तो आई कैन लिटरली टेल यू, इट वाज having a 40 lakh rupee of income
in the last 6 months from this platform is not a joke. And if we are making that amount of money just by making a brand and having 22,000 followers, I believe you all can make it. मतलब मेरे को लगता है कि this is what a lot of people miss out on. There's a lot of business that can happen from LinkedIn as well. So again, next thing. And जो भी brand नहीं बनाना चाहता इतना कुछ सीखने के बाद भी, this is what I can ask you. I don't think so there's a bigger brand on TV than Jethalal. So Gada Electronics has a special place in our heart. Everybody खाना खाते वक्त जब तक तारक मेहता नहीं चलता है हमें महसूस नहीं होता है कुछ कि खाना खा भी रहे. So a lot of households still have Tarak Mehta as their favorite. So the reason this अभी अभी बहुत कैरेक्टर्स अगर आप देखोगे तारक मेहता में चेंज हो गया बट दिस गाय इज देयर. जिस दिन ये चला गया ना तारक मेहता बंद हो जाएगा. दैट इज द पावर ऑफ अ पर्सनल ब्रांड. अपना ब्रांड ऐसा बनाओ कि जब मैं डिलॉयट में हूँ या गूगल में हूँ जब मैं छोड़ने लग जाऊँ ना लोगों के पसीने छूट जाए. रतन टाटा को अगर टाटा से हटा दोगे ना तो टाटा के शेयर ऐसे गिर जाएंगे. ठीक है. दैट इज द पावर. राइट. सैम ऑल्टमैन को जब उसकी कंपनी से ओपन एआई से हटाया फिर वापस हायर किया. क्यों हुआ ये सब चीज? वो ब्रांड है, वो पावर है ना. वो फाउंडर फेमस है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. दैट इज वाई स्टीव जॉब्स, आज भी लोग स्टीव जॉब्स को अप्रिशिएट करते हैं. एप्पल आज टिम कुक चला रहा है ना बट वो फाउंडेशन कौन लगा के गया? स्टीव जॉब्स लगा के गया. So you have to understand. If you don't know, there were two founders, like founders and co-founders, and there were co-founders, Steve Wozniak and Steve Jobs. But most of the people don't even know about Steve Wozniak. He कौन था ये आदमी? But everybody knows about Steve Jobs because he was a better brand than Steve Wozniak. So that is the reason you have to understand that जब आप एक employee भी बनते हो, so you can be special or normal. So that depends upon you. Okay, leave this. Anyway, now there's a project time as simple as that. So project time is as simple that you will go, you will make a post of whatever you have learned here, and Virat Kohli and Anushka boom manevar. Yes, correct, Sammy. You are right. So that's the power of a brand. So I will say that go and make a post today. Make sure that आप एक post बना रहे हो और वो post में आपको करना क्या है? What you have to do is very very simple, nothing very hard. So you have to make this post in which you have to say whatever you have learned. You have to summarize that journey और उस post को save कर लेना. वो आप ही को काम आएगा बाद में जाके क्योंकि fresh information है ना दिमाग में रहेगी. बाद में बनाने का मत सोचना. I'll make sure आप अगर आप मुझे टैग करें तो वो कमेंट में वहां पर करूंगा. इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताया तो अगर मैंने आपके पोस्ट पे कमेंट किया तो मेरे सारे फॉलोअर्स के पास एक फीड जो होती है उन पे जाता है योगेश कमेंटेड ऑन दिस पोस्ट. तो आपके पोस्ट मेरे फॉलोअर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको दिखेगी. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द पोस्ट. यू विल डेफिनेटली हैव अ लिटिल बिट मोर विजिबिलिटी देन व्हाट यू आर हैविंग दिस नाउ right now. So you will make a post and then I'll comment there and that's how I'll go about it. And in case you feel that सर क्यों ही शुरू करना है क्या है ये सब नहीं हो पाएगा हमसे तो बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ जिंदगी में मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है. I know you cannot go back and change the beginning that आप वापस जो घर में पैदा हो गए वही हो गया. अब अंबानी के घर में नहीं पैदा हुए तो नहीं हुए. हम नहीं बन पाए अनंत अंबानी तो नहीं बन पाए. बिल गेट्स की बेटी हम नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए. बट नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ एंड चेंज द एंडिंग ना. लाइफ की एंडिंग तो चेंज कर सकते हैं. बिगिनिंग अपने हाथ में नहीं होती. हम अपने माँ बाप नहीं चूज करते. देखो हम पैदा कहाँ होते हैं हम चूज नहीं कर सकते बट अब मरेंगे कहाँ और कैसे ये हम चूज कर सकते हैं. So let's choose what voluntarily we can do and that is more important than anything else. So this is what from my end. Now if you have any question I'm open to the questions from your end. Guys go forward. Let's go for a Q&A. Whatever you have कुछ भी chat पे भेजो या कुछ भी मैं questions के जवाब दूंगा आपको. And also I'll share a feedback form. So please वो fill कर दीजिएगा. वो fill करने पे I guess I'll be एक playbook मेरे पास रहेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ share कर दूंगा. So that will be easy for you to understand. Anybody who has questions? So guys, how was the session? Informative? You were able to understand? देखो funny तो तभी होता है जब आप लोग अपना करके रखते कैमरा. You would have done a lot of activities. बहुत ये करते. Unfortunately वो नहीं हो पाया. But how was the session? Was it informative? Yes or no? I would really like to know from you guys. Yes, sir, it was a really insightful and really good session. I'm glad that you all liked it. Let me see if I can till then you can just ask the question you guys have.
just I'd really like to answer some questions. जो queries आपके दिल के आपको सिर्फ LinkedIn के related पूछना है, experience I would be able to share something with you. जो भी question है आपके दिमाग में आप share करिए. तब तक let me So, just search for the form if I have. हाँ जी बताइए. so is creating a business profile on LinkedIn similar to creating a personal profile? Not at all. So business profile पहला बात है LinkedIn पे कोई business profile जैसी चीज नहीं होती है. When you have a personal profile, so from there you can actually like from the personal profile what you can do is you can ये create a business or company page. And company page का reach जो होता है वो मतलब 1/100th होता है तुम्हारे personal page का. मतलब जो रीच आपके पर्सनल पेज को मिलेगी उसकी 1/100th रीच मिलती है एक कंपनी पेज को. सो द रीच इज वेरी लेस. So that is why it is recommended to make a personal brand and then grow a company page. Example, today I have 20,000 followers on LinkedIn. Now I have a company called Revamp Tribe. तो अब मैं Revamp Tribe को प्रमोट करता हूँ. बट अगर मैं खुद ब्रांड नहीं होता, मैं Revamp को प्रमोट करता, तो कोई भी Revamp Tribe को फॉलो नहीं करना चाहता. So that is what you should do. Right. Sammy, any thoughts on that? किस बात पे दोस्त? Which okay, sir, I'm 28 and a fresher when it comes to corporate career. What do you want to ask, Sammy? Like ask directly. It will be easy for me to answer then. Go ahead, Sammy. Would love to. Okay, Viraj, any question? And anybody else? Any question that you guys have? Would love to answer that. Mm-hmm. Okay. Can a fresher start to at this age? Any thoughts? Make connections and all? Yeah, definitely. Why not? Yeah, you will. I have seen people at school making their LinkedIn account. So it's not about your age or if you're a fresher or something like that. आपके पास नहीं भी है, आप बोलोगे सर फ्रेशर है तो क्या लिखें? तो क्या लिखे मैं एक ही चीज बोलूंगा. What you can write is very simple there, that you are a aspiring business analyst or an aspiring fund manager. आप keywords के लिए वो aspiring ये सब word यूज कर सकते हैं. और अगर आप एक जैसे आप एआई में कुछ करना चाहते हैं आगे, तो आप लिख दीजिए मतलब एआई एंथुसियास्ट, डिजिटल मार्केटर, व्हाटएवर यू फील लाइक. So that is very very important for you, that you understand that whenever you are uh, growing as a fresher, you are fresher just with the mindset. Ultimately तुम्हारे लाइफ का एक्सपीरियंस और पूजा के लाइफ का एक्सपीरियंस और विराज का लाइफ का एक्सपीरियंस सेम नहीं होगा. सो कल ही मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने क्लाइंट के लिए पोस्ट लिखा था जिसमें हम इसी बारे में बात कर रहे थे, दैट यू शुड हायर यूजिंग अ स्किल और अ विल. तो एक बहुत प्यारी बुक है, आई गेस द इंट्यूटिव वॉरियर. इट्स अ बुक बेस्ड ऑन हाउ नेवी सील. सो नेवी सील जो होते हैं यूएस में, उनके जॉब बहुत टफ होती है. सो दैट इज ऑल्सो मतलब आई बिलीव वो बहुत टफ जॉब होती है. तो वहां पे पता है क्या होता है नेवी में, आधे से ज्यादा लोगों को जब हायर करते हैं, सब कुछ करते हैं. सो बेसिकली इंट्यूशन इज व्हाट दे चेक. मतलब इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन स्किल. तो नेवी का जॉब तो एक ऐसा है, नेवी सील का, इट्स लाइक एक गलत डिसीजन और लाइफ और डेथ का सिचुएशन आ जाता है. सो वहां पर इंट्यूशन काम करता है. तो वैसे जॉब में अगर इंट्यूशन ले रहे हैं तो आप बिलीव करो कि यू आर मोर देन योर स्किल्स. पीपल विल लुक एट यू एंड हायर यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ, प्लीज वो भी भर दो आप लोग. टिल देन आई विल आंसर मोर क्वेश्चन. रियल टाइम भर दो यार, बाद में जाके भूल ही जाओगे. तो एक फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, वो भर दो. इट विल हेल्प मी अ लॉट. एंड एक ग्रुप भी अगर आप चाहो तो उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो. वहाँ पे स्टूडेंट्स है और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के. सो वहाँ इंटरेक्ट नेटवर्क आप कुछ भी कर सकते हो. Okay, if you want to contact you, we can contact through LinkedIn only. Yes, you can contact me on LinkedIn. You can DM me anytime. मैंने अपना प्रोफाइल अभी ओपन कर दिया है. ओपन मतलब आप मेरे को मैसेजेस भेज पाओगे बिना किसी चीज के. सो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू कैन सेंड मी मैसेजेस विदाउट एनी ईमेल ऑल्सो. तो मैंने उसको ओपन प्रोफाइल में टर्न कर दिया है. तो दैट इज समथिंग यू कैन डू. Okay, what else? What other questions do you have? Anyone? Any questions? Sir, does the content needs to be only formal? No, भाई, मैं तो अधिकतर बात इंग्लिश में बात करता हूँ वहाँ पे. My last content, the second last content जाके पढ़िए. The heading was LinkedIn has changed more than my ex since 2023. ये मेरे तो टाइटल था कंटेंट का, which everybody loved.
So you can be very much how you are, like how you are as a person on LinkedIn. आप मैं भाई ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बात कर सकता सीरियसली, मेरे से पॉसिबल नहीं है. मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं स्टेज पे जाके भी मजाक करता हूँ. अभी लिटरली आई गेव अ टॉक इन फ्रंट ऑफ 3000 ऑडियंस इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और भाई मैं पूरे सेशन में मजाक किया हूँ. वही वही I love talking to people like that. So that's my personality. So I would really like to show that instead of being formal. Thank you so much, Ritika. Really means a lot. It was a pleasure giving such a session to you guys. Do you have LinkedIn Premium to give out to, or anyone I can approach for LinkedIn Premium? Yeah, Michelle, I do have. I can give out a business premium at a certain. You can connect with me on LinkedIn for the same, but I don't have a career premium access right now. अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा. अगर cheap rates पे होगा तो I do have tie-ups with LinkedIn, so I'll be able to get you at cheap rates. But career premium is out of stock as of now. But you can try doing with your college ID or email ID if you have. Probably they can give you an access to the same. So that would mean a lot. Okay. I hope you guys are filling the form, because I really appreciate genuine feedback on however the session was. It's a very, very, very small form to be filled. So would appreciate that, everybody. Check it. Okay. Can you send feedback link? Yes, I sent the feedback form to everybody. I'm sending that again. Copy and paste. I'm doing. Okay. That's done. That's done again. Please check it out. Any other question, guys? Any other question related to LinkedIn, your career? How should you, like, any resume, career interview, whatever you want to ask? I'm there for more, maybe 5-10 minutes if you want. Otherwise, we can close this. No problem. But if you have any question related to career you want to ask, I would love to answer that. Okay. Admit. Veda is done. Okay. Okay. There are 2 forms filled as of now, 2 or 3. बहुत धीरे करते हो यार तुम लोग. Okay. Questions. Okay, done. Okay, done. Now you guys are getting faster. Great. But I'll tell you guys, go and change your LinkedIn profile picture today. Make sure you change your banner, you write a content. शुरू करो लिखना. Your life will change. आपको मैं multiple ऐसे profiles दिखा सकता हूँ. छोटे बच्चे second year में, I know a second year girl given 100+ talks. मतलब ड्यू के सेकेंड ईयर के, 19 साल की है, 100 से ऊपर टॉक दे चुकी है, जो स्टॉक्स कर चुकी है, खुद का स्टार्टअप है, सोशल एंटरप्रेन्योर है. When you say that LinkedIn is a limit, like she's having 4 times the follower I am having, so you understand that way. ये सोचो यार, मतलब sky is the limit when it comes to any such social platform. So please उसको seriously लो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि आज सुना और फिर कल छोड़ देंगे या नहीं करेंगे. इंस्पिरेशन की कमी है, आइए मेरे से बात करिए आप डीएम्स में. आई विल टॉक टू यू, और यू कैन चेक माय लास्ट कपल ऑफ पोस्ट. लिखना कैसे होता है वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ टू राइट ऑन लिंक्डइन, व्हाट वर्क्स, व्हाट डू नॉट, कैसे कमेंट करना है, कैसे कमेंट का रिप्लाई करना है. प्रोबेबली गोइंग थ्रू माय अकाउंट यू विल लर्न अ लॉट. ऑल्सो अगर आप मेरे अकाउंट में मैंने 500 पोस्ट किया है, अगर आप बुक की जगह वो 500 पोस्ट पढ़ लेंगे ना, वो अपने में एक लिंक्डइन और नेटवर्किंग का कोर्स है. मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिंक्डइन के हैक्स वहां पर शेयर करके रखे हैं. तो अगर आप कभी भी कोई कोर्स भी नहीं करना चाहें और सिर्फ मेरे पोस्ट भी जाके पढ़ लोगे, इनफैक्ट जो मेरा लास्ट पोस्ट है, लास्ट टू लास्ट पोस्ट, अगर आप वही पढ़ लोगे ना, तो आप लिंक्डइन आधा सीख जाओगे थ्रू वन पोस्ट ओनली. So make sure that you are putting that effort out there to learn that. Cool. I hope we are done, Naveen sir. I guess that's all from my end. Happy to be here and talking. I hope you guys enjoyed. Who was there? Like, who introduced me? Who was the guy? It was Urzeen, right? If I'm not wrong. Cool. So then we can Okay, sign sir. off. Okay, sir. I want to proceed with thank you note right now. So very heartfelt thank you for being part of this our masterclass season 3 episode 5 on LinkedIn career with our distinguished speaker, very charming personality, Mr. Yogesh Agarwal sir. So Yogesh sir's insights about personal branding, LinkedIn strategies, and art of building presence, strong online presence have undoubtedly left a lasting impact on us all. We hope you found the session as enriching and inspiring as we did. So a big shout out
to Mr. Yogesh Agarwal, sir, for sharing his expertise and valuable experiences. Your wisdom undoubtedly lead the path for many aspiring professionals, and we are very grateful for your contributions. Special thanks to the MCOM Committee of HR College, Naveen Punjabi sir, and HR College for organizing this insightful webinar. Your dedication to providing quality educational experience shines through. So, to the participants, your active participation and engaging questions made the session truly dynamic. We hope you have gained valuable insight that will contribute to your professional journey. So, keep an eye out for future events from the MCOM committee. We look forward to welcoming you again for enlightening experiences. Thank you once again for being part of this educational journey. Thank you so much, sir. Cool, yeah. Thank you so much, guys, for being here. I appreciate, yeah, such a beautiful, remark in terms of how you have, you know, kept the session all together. But what one thing I would really say or tell you that right now, when you're in a place like Mumbai, I guess it's called Mumbai if I'm not wrong, HR College, right? Yes, yes, yes. So the city you belong to is really very fast, and there are a lot of opportunities out there. So probably when I say I belong from a place which is again a very remote village, अगर आप उस शहर में हैं, उस शहर में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत कुछ जानते हैं और कुछ नहीं तो बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइब्रेरी। हर दिन एक नए इंसान से मिलो, 1 घंटे उससे बात करो या आधे घंटे बात करो और उससे उसकी जर्नी जानो। दैट विल गिव यू अ लॉट मोर लर्निंग एंड इंस्पिरेशन देन रीडिंग एनी बुक। दिस इज द like major thing I would really like to say before leaving. बहुत लोग सोचते हैं अदर वे राउंड के बुक्स पढ़ लेते हैं बहुत सारे, भैया गया वो जमाना। आज एक इंसान ने इतना अचीव कर लिया, और इंसान पहले बुक्स क्यों पढ़ते थे? क्योंकि इंसान अप्रोचेबल नहीं था, वो जर्नी नहीं थी। वैसे आप इंस्टाग्राम पे नहीं बात कर सकते थे, लिंक्डइन पे नहीं कर सकते थे, 4G जमाना नहीं होता था, 5G हो गया यार जमाना। So the approach also has to change. So that's something I really like to say and make sure that you are doing it. Cool. And thank you so much, Viraj, for the warm ending and words. And would look forward to interact with you guys on LinkedIn. Cheers and ta-ra.